फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर एक्ट के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, वो है मेजर्स फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन। मेजर्स फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन, राइट। एंड ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके ऊपर ऑलरेडी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था दिसंबर 23 टर्म में एंड वेटेज था अप टू 7 मार्क्स का, राइट। एंड ये टॉपिक मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से रिपीट हो सकता है फॉर दिसंबर 24 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। एंड ऑल्सो ये जो टॉपिक है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में, ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, CMA फाइनल ग्रुप 3 के अंदर दोनों सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक को देखने को मिलेगा। एक तो लॉ के अंदर है एंड ऑल्सो इन एसएफएम के अंदर एक चैप्टर है सिक्योरिटाइजेशन को लेकर। वो सिक्योरिटाइजेशन के अंदर भी ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का बेनिफिट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो वहाँ पर पूरे अच्छे से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, राइट। एंड ऑल्सो लॉ के अंदर भी सॉर्फेसाई एक्ट के अंदर ये टॉपिक इंक्लूड किया गया है, मेजर्स फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन, राइट। तो मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में एक अच्छे से वीडियो बनाना चाहिए एंड ऑल्सो अगर ये टॉपिक अगर एग्जाम में आए तो कैसे हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख सकते हैं कैसे आंसर राइटिंग, right? So without wasting any further time, let's get started. So see, measures for asset reconstruction, or you can say asset reconstruction company. In short, you can say ARC. तो ARC क्या है? See, as per section 9 of SARFESAI Act, SARFESAI Act के अंदर आउटलाइन है various measures that an asset reconstruction company can take over to recover or manage distressed asset from borrowers. Okay, so distressed asset means what? Distressed asset means those assets that are under financial या फिर operational distress, typically you can say due to financial difficulties of the owner, and these type of assets are often in jeopardy of default or you can say liquidation, leading to a reduction in their market value. So in the financial world, you can say that distressed assets include loans, bonds or even real estate that are being sold at a significant discount due to the owner's inability to meet financial obligations, right? And asset reconstruction company का काम ये है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ इनिशिएटिव लेकर वो सब जो डिफॉल्ट है, जो फिनेंशियल डिफॉल्ट्स विथ रिफर्स टू डिस्ट्रेस्ड एसेट, वो सब रिकवरी करने में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को मतलब पूरे रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। ओके, सो वी कैन राइट दैट इन डेफिनेशन दैट सेक्शन 9 ऑफ द SARFESAI Act 2002 outlines various measures that an asset reconstruction company, in short ARC, can take to recover or you can say manage distressed assets from borrowers, राइट। तो इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। जो एक्चुअली प्रैक्टिकल है वो लिखना चाहिए। दैट सेक्शन 9 ऑफ द SARFESAI Act 2002 outlines various measures that an asset reconstruction company can take to recover or manage distressed asset from borrowers, right? Then there are different type of steps which are taken by ARC, such as you can write that first and most important, change in or takeover of borrowers management. चेंज इन और टेक ओवर ऑफ बोरोर्स मैनेजमेंट, ये सब की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख रहा हूँ। एंड अगर एक्सप्लेनेशन करने को होगा तो 2 to 3 लाइन्स ही लिखना है। दैट एन ARC कैन आइदर चेंज और take over the management of the borrowers
of the borrower's business to ensure better control and recovery of assets. Right? Only 2 to 3 lines is more than enough. Right? 7 marks का क्वेश्चन आएगा तो की हेडिंग में ऐसे लिखना है चेंज इन और टेक ओवर ऑफ बोरोवर्स मैनेजमेंट. अगर एक्सपेंशन करना है तो only 2 to 3 line is more than enough. That an ARC can either change or take over the management of the borrower's business to ensure better control and recovery of assets. Then second point लिखना है selling or leasing the borrower's business. Selling or leasing the borrower's business means what? Selling or leasing the borrower's business means an ARC has the right to sell or lease part or the entire business of the borrower to recover the outstanding debt. Simple. You can write that an ARC has the right to sell or lease parts or the entire business of the borrower to recover the outstanding debt. Right? Only 2 lines is more than enough. Then in third you can write that rescheduling debt payment. Rescheduling debt payments. Rescheduling debt payments means ARC जो है means asset reconstruction companies. ARCs can rearrange or modify the repayment schedule to make it easier for the borrower to repay their debt over a different time frame. Right? So schedule कर सकता है ARC so that borrower के लिए ये अच्छा हो सकता है so that borrower can decide when to pay the repay the borrowing money. Right? So you can write that ARC can rearrange or modify the repayment schedule to make it easier for the borrower to repay their debt over a different time frame. Right? Rescheduling the debt payment. Okay, so next important point you can write that enforcing security interest. ये सबसे important point है enforcing security interest. Okay, so enforcing security interest means what? Means asset reconstruction company can enforce the borrower's pledged assets, like you can say to recover the debt according to SARFESAI guidelines. So let's write asset reconstruction companies can enforce the borrower's pledged assets. You can say property to recover the debt according to SARFESAI Act or guidelines. Enforcing security interest. ARCs can enforce the borrower's pledged asset like property to recover the debts according to SARFESAI guidelines. Okay. Then up to 7 important key points ही लिखना है. Then number 5, settling dues. Settling dues means
an ARC can negotiate and settle the borrower's debt for a certain amount if full recovery is not possible. अगर full recovery possible नहीं हो पा रहा है borrowers के द्वारा, तो in that case an ARC can negotiate it and settle the borrower's debt for a certain amount, right? तो negotiate करके ARC जो है वो एक certain amount fix करता है so that it may easy for borrowers to repay, right? So let's write an ARC can negotiate and settle the borrower's debt for a certain amount if full recovery is not possible. अगर full amount recovery नहीं हो पा रहा है, in that case ARC can negotiate it to reduce the amount so that it is affordable for borrowers to repay, right? Then number 6, taking possession of secured assets. Taking possession of secured asset. Taking possession of secured asset. So asset reconstruction company can take control of the borrower's secured assets, which is called collateral, to either manage or you can say sell them for debt recovery. Simply, an ARC can take control of the borrower's secured assets, which is called collateral to either manage or sell them for debt recovery. Take possession of secured assets. An ARC can take control of the borrower's secured asset, collateral to either manage or sell them for debt recovery. Then last and most important, converting debt to equity. Converting debt to equity or equity shares, right? An ARC can convert a portion of the borrower's debt into shares of the borrower's company, effectively making the ARC a shareholder in the business, right? So let's write that an ARC can convert a portion of the borrower's debt into shares of the borrower's company, effectively making the ARC a shareholder in the business, राइट? तो ऐसे ही हमको 7 पॉइंट्स ही लिखना है, 7 की पॉइंट्स लिखना है, राइट? एंड जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओवरसीज ARCs and gives guidelines on these measures, including policies for managing borrowers' businesses and setting fees. So ARC must follow RBI's guidelines and directions while implementing these measures, right? In essence, Section 9 gives ARCs several tools to recover debts effectively under RBI's supervision, right? तो ऐसे ही हमको 7 की पॉइंट्स ही लिखना है. अगर एक्सपेंशन करना है तो 2 to 3 लाइन्स इज मोर देन एनफ, एंड बोथ ऑफ रिलीवेंट होना चाहिए, एंड पूरे कंसाइज एंड प्रिसाइज होना चाहिए, वेल हैंड रिटन होना चाहिए, एंड पूरे फैक्ट होना चाहिए, एंड की पॉइंट्स अच्छे से लिख कर आना चाहिए. तो ऐसे ही लिखना है सो दैट एग्जामिनर को लगे कि जो एस्पिरेंट है वो अच्छे से रीड करके आया है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में. तो जहाँ जहाँ सेक्शन लिखना जरूरी है वहाँ पर सेक्शन लिखना है. अगर सेक्शन याद नहीं है तो लिख सकते हैं आज पर द प्रेस्क्राइब्ड सेक्शन outlines various measures that an asset reconstruction company can take to recover or manage distressed asset from borrowers, right? So that you can write
key points, that charge in or takeover of borrowers management, and then selling or leasing the borrower's business, then rescheduling debt payments, and then enforcing security interest, then settling dues, then taking possession of secured assets, and in last, converting debt to equity shares. And in conclusion, you can write that the Reserve Bank of India, RBI, oversees ARCs and provides guidelines on these measures, including policies for managing borrowers' business and setting fees. So ARC must follow RBI's guidelines and directions while implementing these measures. In essence, Section 9 gives ARC several tools to recover debts effectively, that to be under RBI's supervision. Right. So this is it all about measures for asset reconstruction. Thank you so much.